over 100 doctors from India and South Asian countries gathered in Delhi to fight VTE, Venous Thrombo Embolism, a deadly disease which is killing more people than cancer is killing. VTE is known to be the leading cause of death after bariatric surgery all over the world. The seminar was named as Fight VTE CON 2017. We have gathered today to discuss how to prevent deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis is a very major health problem which is faced by everybody today, especially all the patients, and it is a preventable cause of death in most of the hospital settings. एंड वेन्स यूजुअली हम उनको बोलते हैं, जैसे हमारे शरीर में दो तरह की खून की नसें होती हैं, खून लाने वाली और खून ले जाने वाली। तो जो उल्टे दौरे की नसें हैं, वेन्स हैं, हार्ट पंप करता है, खून नीचे अपने आप आ जाता है। बट नीचे से जो खून जाता है वो हमारी मूवमेंट पे डिपेंड करता है। जब हम मूव करते हैं हमारी पिंडली दबती है, खून का दौरा ऊपर को जाता है। तो किसी भी कारण से अगर हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, अगर हम लंबी फ़्लाइट ले रहे हैं, लंबे समय तक हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, या हमें कोई चोट लग जाती है, या हमारा खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, या किसी दवा लेने की वजह से, या सिगरेट पीने की वजह से, या ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से, तो ऑल दीज सिनेरियोज दे लीव टू अ हाइपर कोआगुलेबल स्टेज एंड खून जम सकता है। ये क्लॉट्स मूव करके लंग्स में जाते हैं और जान का खतरा हो सकता है और मरीज़ मर सकता है। सो वो सारे प्रिकॉशंस क्या क्या हैं कि हम सब लें जिसकी वजह से हमें ये पेशेंट जो हैं दे डोंट डाई। सो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो खून को पतला रखती हैं, जिनको कंट्रोल्ड वे में यूज़ करने से पेशेंट do not develop this deep vein thrombosis. So that was the main theme of this meeting, so that we should advocate the use of these medicine. There are certain mechanical devices जहाँ पे दवा नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे mechanical device यूज़ करने हैं। There are certain other special ways to take care of this, जैसे पेशेंट को बोला कि जल्दी से मोबिलाइज होना है, ज़्यादा देर तक लेटे नहीं रहना है, पैरों की एक्टिव मूवमेंट करते रहना है, अपना वज़न कंट्रोल के रखना है। तो ये सारी चीज़ों से जो सबसे बड़ा एक प्रिवेंटेबल कारण है डेथ का, वो हम बचा सकते हैं। आप लोगों को हैरानी होगी सुन के कि इवन कैंसर और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से भी ज़्यादा मरीज़ किसी बड़े कॉन्टिनेंट लाइक अमेरिका में इस बीमारी की वजह से मरते हैं, जिसका नाम डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। There is a growing sense of concern in the Indian medical community that venous thrombo embolism, VTE, bad clots in the deep veins of the lower limbs especially, may be occurring more commonly than earlier thought in the hospitalized Indian patients. Till the last decade, VTE was considered less common in India compared to the West. आज का जो कार्यक्रम रहा है वो एसेंशियली सेफ सर्जरी पे रहा है। आज और काफ़ी सालों से सुरक्षित सर्जरी की कॉन्सेप्ट बढ़ती गई है, क्योंकि देखा गया है सर्जरी एक हाई स्टेक्स फील्ड है। 10 से लेकर 20% सर्जरी के बाद में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है। हमारा ये प्रयास है और प्रार्थना है कि सर्जरी के बाद में कॉम्प्लिकेशंस ना हो। कॉम्प्लिकेशंस के अनेक कारण होते हैं। नंबर 1, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, सर्जिकल साइड इन्फेक्शंस। दूसरी बात है एडवर्स ड्रग इवेंट्स होती हैं। और तीसरा जो है, अस्पताल के रहने के साथ ख़राब खून की गांठ बनती हैं। तो हम इन सारी प्रॉब्लम्स और समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं, और सारी प्रोटोकॉल स्ट्रेटजी जो हमारी प्लान होती है, पेरी ऑपरेटिव केयर जो हम बताते हैं, वो इस उद्देश्य, ये मकसद ये होता है कि ये प्रॉब्लम्स ना हो। आज का कार्यक्रम में हमने VTE जो है, ख़राब खून की गांठ पे फोकस किया है। और आज इसे आपने देखा है, हर स्पेशलिटी के कंसल्टेंट्स, इंडिया के लीडिंग कंसल्टेंट्स, एशिया पैसिफिक रीजन से लीडिंग कंसल्टेंट्स ने आके अपना एक्सपीरियंस, अपना रिसर्च, अपनी एडवोकेसी आपके साथ शेयर किया है, ताकि यहाँ के सारे जो डेलीगेट्स हों, कम से कम 250 से ज़्यादा जो डॉक्टर्स आए हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल जाए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਟ VTE ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਵਰਾਜ ਜੌਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਇੰਟੈਂਸਿਵਿਸਟ, ਸਰਜਨਸ, ਬੈਰੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨਸ, ਵਾਸਕੂਲਰ ਸਰਜਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਮੋਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟਡ ਹੁੰਦੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਫਲੈਕਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫਲੈਕਸਿਸ, ਕੁਛ ਡਰੱਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਇਵਨ ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਟ ਐਨੀ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ 1 ਜਾਂ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲੱਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ मैनेज करने वाली बड़ी ज़रूरी हैगी चीज़ है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी यूजुअली जब करी जाती है तो उसमें ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, और ओल्ड एज पेशेंट्स जो होते हैं वो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर। तो ऐसी कंडीशन में सेफ सर्जरी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और जो भी जितने भी प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ हैं वो हम लोग सेफ सर्जरीज इस इंटरवेंशन से कर सकते हैं। जैसे अगर आप VTE प्रिवेंशन नहीं करते हैं, अगर आप उसको रूटीन में नहीं यूज़ करते हैं, तो जो लेवल जो अच्छी स्टडीज़ हैं, जो लेवल 1 या लेवल 2 की स्टडीज़ हैं, उनके हिसाब से 1000 पेशेंट्स में से 8 पेशेंट्स को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, और ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है ये टोटली प्रिवेंटेबल है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि ये जो 8 मरीज़ हैं जिनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना ही होना है 1000 में से 8 को, तो इन 8 पेशेंट्स को क्यों ना बचाएं। While nationwide clinical surveillance for this clinical entity is lacking in India, a number of observational studies over the last decade depict a rising trend for VTE in India. VTE carries a significant risk of dying and adverse long-term health sequelae. Concerned about this unhealthy trend, a few pioneering clinicians have studied the Indian medical response to it as well. So VTE, venous thrombo embolism, is the most preventable cause of hospital death. So patients go into hospital, especially surgical patients, they are actually for the most part healthy, so that they can have surgery. And it's really devastating when the patients die from complications that's actually not because of having the surgery, but post-operative complications. So if you think about it, if your mum went and had surgery, or your dad had surgery, and then all of a sudden they died from something that was not related, it's completely devastating. So that's the significance of today, is to actually bring awareness to the whole medical community that everybody's responsible to reduce the incidence of this preventable disease. What are the importance of venous thromboembolism? पैरों में क्लॉट आना, पैरों की नसें रुक जाना, and वो क्लॉट जब लंग्स में जाता है, which is called pulmonary embolism, and how does that affect our daily life? We did studies in hospital. We learned from different studies that pulmonary embolism is one of the leading cause of death in hospital patients, and it is all preventable, 100% preventable. And pulmonary artery embolism can be prevented by using IVC filters, by using different medicines. And the deliberation and the talks today were mostly on how to prevent DVT, on how to treat DVT, and how to prevent its complications. And I think it is very important that we all understand that all the patients who are admitted to a hospital are at certain risk of pulmonary embolism and deep venous thrombosis. And all this is preventable by just knowing, stratifying which patients need prophylaxis, which doesn't. By giving them proper medicines, pumps or stockings, we can prevent DVT, and then subsequently manage the complications by putting in filters in selected group of patients. I had a talk on IVC filters today, and it is a life-saving device. A person who clot has gone into the lungs,
पैरों से क्लॉट निकल के अगर लंग्स में गया है और उसको क्या हम पेट में रोक सकते हैं जिससे लंग्स को ख़राब ना करे, हार्ट को ख़राब ना करे। लॉट ऑफ पेशेंट्स जो लॉन्ग फ्लाइट्स के बाद आते हैं, वो आते आते एकदम से आप फ्लाइट से उतरे, जब तक घर पहुँचे सांस फूलनी शुरू हो गई। तो बेसिकली क्लॉट जो लंग्स में हुआ, आपके पैरों में हुआ, वो टूट के लंग्स में गया, जिससे आपकी जान जा सकती थी। बट फॉर्चुनेटली हम IVC फ़िल्टर डाल के इसको बचा सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड this will imparting this information to all patients, general public as well as doctors will help us in saving a lot of lives. I was required to speak on the rationale for risk assessment in surgical patients of surgical patients who are likely to suffer from venous thromboembolism. So it's something that's now considered as conventional wisdom that surgical patients should be stratified for their risk of developing venous thrombosis and thromboembolism, because the stakes are very high. A complication in the form of venous thromboembolism can be disastrous in surgical patients. So fortunately there are objective risk assessment models that are available which can stratify this risk. These models are available in the form of smartphone-based apps that can be downloaded on your phones and can be supplied to the residents in a department of surgery or to even the nursing staff. And it's important that each and every patient who is to undergo surgery should be subjected to a risk assessment survey, and appropriate forms of thromboprophylactic therapy should be instituted. Due to the unavailability of large, unambiguous clinical data attesting to its commoner incidence, most Indian clinicians still feel that VTE is less common in India than in the West. Furthermore, concerns about the risk of bleeding-related adverse clinical outcomes due to the VTE preventive anticoagulation and its attendant cost seriously limit to the utilization of VTE risk-appropriate pharmacoprophylaxis. Recent registries from India reveal a worrying fact. Hospital-acquired VTE, HAVTE, carries a higher mortality rate than non-hospital related VTE, and that VTE rates are growing in India. The economy class flight syndrome is for real, there is no doubt about it, and there have been some very dramatic newspaper reports, some well-known personalities have suffered from it. However, if we take it from purely statistical point of view, the numbers are very, very small. So, to the extent that it does not constitute a public health problem, but it needs to be told, the public needs to be informed so that those at risk can take appropriate measures for it. Fight VTE Con is a very special event wherein all the different specialties get together to discuss about prevention of deep venous thrombosis, that is blood clotting in the legs of patients, and it can be a life-threatening disease. So to discuss the preventing modalities and the treatment of this debilitating disease is a very close to heart initiative of our department in Sir Gangaram Hospital. We have been doing it for last 4 years. We get experts from all over the world and all over the country to come together, brainstorm, discuss the various aspects so that our patients don't get this preventable disease, which is one of the leading causes of death in healthcare systems worldwide. Stroke is a very, very important thing, and person suffers with a lot of weakness and disability after stroke. They are not able to walk, move adequately. 2-3 things are very important. They should walk, they should move whatever possible limb, and they have to make plenty of effort to move their extremities. They have to stand, they have to walk with support, and they have to take plenty of liquids, and they have to maintain their hydration. These things are very important. Apart from them, medication and supportive care is medically, whatever is needed, it's important. मेरे को DVT मैं जब 53 साल की उम्र का था उस टाइम में ये हो गया। उसका पता कैसे लगा कि जब मैं ब्रिस्क वॉक करता था तो मेरा सांस फूलता था। सांस फूलने के बाद एक ऐसी स्टेज आई कि मैं बिल्कुल ही नहीं चल पाता था। उसके बाद मैं
हॉस्पिटलाइज हुआ। हॉस्पिटलाइज होने के बाद उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी करने के बाद उन्हें ये नहीं पता चला कि अब उन्होंने कहा कि आपका तो चेस्ट बहुत सही है, 55% आपका ब्लॉकेज है ही नहीं, मतलब कुछ भी। फिर उन्होंने मेरे बॉडी स्कैन किया। बॉडी स्कैन करने के बाद उन्हें पता लगा कि हमें ब्लड के क्लॉट्स बन रहे हैं अंगूठे से। मैंने फिर जो है उन्होंने बॉडी स्कैन करने के बाद वो ट्रीटमेंट शुरू किया, जो कि एक उनके लिए भी बड़ी एक आश्चर्य की बात थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरा जो ऑक्सीजन इंटेक था वो 95% तक वो ले गए। और फिर मैं मतलब धीरे धीरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद मैंने उन्होंने हमको कहा कि आपके लिए 2-3 काम जो है बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, आप ब्रिस्क वॉक करें हाफ एन आवर। दूसरा, एक एंटी कोगुलेंट गोली दी उन्होंने। और तीसरा ये कहा कि आपको रेगुलरली इंटरवल पे PT-INR वैल्यू उसे आपने मेंटेन करना है, 2.5 to 3 या 2 to 3 के बीच में होना चाहिए। और वो मैं एक टेबुलेशन करके हर महीने अपना PT-INR मेंटेन करता हूँ। और आज मेरी उम्र 70 साल हो गई है, तो ये मैं डॉक्टरों की एक ब्लेसिंग मानता हूँ कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन उन डॉक्टरों की मदद से मैं अभी तक अपनी जीवन को चला रहा हूँ। Indian doctors often face an uphill task to provide their patients the best clinical treatment in terms of patient safety and quality healthcare in the face of the lack of clear, large-scale evidence relating to the true incidence of HAVTE in India. Beginning as a local event to refine the strategy to prevent VTE in bariatric surgery completely in our patients, where we began to share our experience with others about 7 years ago at Fight VTE CON 2012. This passion has now grown into a national event and movement. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सर्जरी एक एस्पेक्ट है उसकी सेफ्टी का कि सर्जरी सेफ़ होनी चाहिए, पर उसके पहले और उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं उन सब को भी सेफ़ बनाने के लिए हमारी ये आज का जो इवेंट है उसके लिए है कि टू प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो हाउ टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ योर सर्जरी बाय प्रिवेंटिंग DVT एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इन प्रायर टू सर्जरी हमारा ये रहेगा कि पेशेंट हाइड्रेटेड हो, एक्सरसाइज करता रहे और उसको मैकेनिकल प्रोफिलैक्सिस स्टार्ट कर दी जाए। एंड आफ्टर सर्जरी मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल प्रोफिलैक्सिस विच इज़ फार्मास्यूटिकल प्रोफिलैक्सिस दोनों स्टार्ट करी जाएँ। और एट द सेम टाइम उसकी रिहैब, उसकी मोबिलाइजेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट की जाए टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ द सर्जरी एंड मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस के साथ। That's that. Basically, this event is actually for the safety of the patients. We have been seeing thromboembolism, or which it's in a normal language, in a layman's language, it is often taken as a simple heart attack. But actually, it is much more, wider spread. And any patient who is long-term bed rest, who is taking long-term bed rest, going through major surgeries, or who is admitted in hospital for long, he is more at risk of thromboembolism. The thromboembolism is basically a small clot. The blood forms some clots because of some, you can say, a chemical locha. There is some clot in the, and that clot blocks the some important supply. Now, if it blocks the lung, then it is pulmonary embolism. If it blocks the brain vessels, then it is a stroke. If it blocks the cardiac vessels, then it is a heart attack. So that embolism event, the clotting of that blood and then blocking the vessels, that is dangerous to life and dangerous to in many other ways to the patients. And it can be prevented. The important thing is that it can be prevented, and that's why this conference is really, makes a lot of doctors and medical fraternity aware about the problem of this problem, and making them aware about their recognition and prevention and then the treatment. So Dr. John has been organizing this workshop, I think this conference for last 4 years. This is the 4th one,
and it's really good. I have been attending it every time and it's really very good.